Hi everyone, and welcome back to the official channel of LegalEdge. Now let's start with our weekly roundup. ठीक है? तो अब अगर इस वीक की हम बात करें ना, तो there are two important topics from the perspective of our legal reasoning concepts. ठीक है? और जो दो important topics हैं हमारे पास, one is about the recent boat accident which took place in मध्य प्रदेश ओनली, बरगी डैम के ऊपर. ठीक है? अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज हेयरइन वी कैन अंडरस्टैंड और डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट. ठीक है? So whether the state can be held responsible for the accident which took place in the Burgi Dam, that's one important topic. And the second is about the recent verdict of the Supreme Court of India. A recent verdict of the Supreme Court with respect to hate speech or provisions of hate speech in our country. कुछ पिटिशंस फाइल हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, टू क्लेम कंटिन्यूइंग मैंडेमस फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, कोर्ट से कंटिन्यूअस मैंडेमस ऑब्टेन करने के लिए कुछ पिटिशंस फाइल हुए थे विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ हेट स्पीच इन आवर कंट्री. तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया अपना, दैट इज द सेकंड टॉपिक, एंड दीज टू आर द इंपॉर्टेंट वन फॉर आवर दिस वीकली लीगल राउंडअप. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट इशू, wherein the Jabalpur cruise tragedy is pretty much important. तो लास्ट वीक की ही बात है कि जबलपुर में नर्मदा रिवर के ऊपर, ठीक है, नर्मदा रिवर के ऊपर देयर इज अ डैम विच इज नोन एज द बरगी डैम. ठीक है, बरगी डैम पे टूरिज्म के पर्पसेस से जो मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट है, द टूरिज्म डिपार्टमेंट एक्चुअली कंडक्ट वेरियस वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज, एंड वन सच एक्टिविटी इंक्लूडेड द क्रूज शिप फॉर द टूरिस्ट्स. और ये एक्टिविटी कोई अभी इंट्रोड्यूस हुई थी या अभी स्टार्ट हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है. सालों से वहां पर क्रूज शिप चला आ रहा था. But last week क्या हुआ? The cruise ship got stuck in a not so good weather condition, which led to death of certain individuals, along with injuries being caused to others. अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक क्या एक्शन लिया? तो भाई ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया, जो वहां के इंचार्ज थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, इंक्वायरी कंडक्ट कर दी गई है, इंक्वायरी स्टार्ट कर दी गई है. But primary concern as a law student should be that whether the state can be held responsible in this situation or not. क्या स्टेट गवर्नमेंट को हम लाइबल कर वहां पर उनसे हम कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच विल बी डिस्कसिंग ओवर हियर. ठीक है, तो इंसिडेंट की अगर हम बात करें, so the sudden storm overturned a cruise boat near Khamaria Tapu on the Burgi Dam. ठीक है, the toll was there were 35 to 40 total passengers on board. 4 or more than 4 are now confirmed death, and 15 to 18 were currently unaccounted for, and 15 plus were rescued by the local fishermen and the first responder. किस वजह से ये इंसिडेंट हुआ? So the trigger was severe winds and high waves caused by the sudden adverse weather shift, causing the vessel to lose balance and gradually sink in the river. ठीक है, इसके बाद स्टेट ने एक्शन क्या क्या लिया? तो भाई सबसे पहले तो जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स थी, SDRF teams and local police conducting nighttime rescues using motorboats and human chains. The Chief Minister of Madhya Pradesh, Mohan Yadav, announced 4 lakh rupees compensation to the families of the deceased, and now investigation is pending in this particular scenario. So the Public Welfare or Public Works Department Minister, PWD Minister Rakesh Singh confirms an impending inquiry into the potential negligence, specifically regarding disregarded weather department warnings, passenger limits, and missing safety equipments as well. क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स बाहर आई, सामने आई, जिसमें ये पता चला कि भाई एडिक्वेट नंबर ऑफ लाइफ जैकेट्स उसमें नहीं थी. ठीक है, फिर क्या डिपार्टमेंट उस सिचुएशन में या ड्राइवर नेग्लिजेंट था टू टेक द बोट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इन्वेस्टिगेशन अब कंडक्ट किया जा रहा है इस एंटायर इंसिडेंट के अंदर. बट प्राइमरली द कंसर्न शुड बी दैट वेदर द स्टेट कैन बी हेल्ड वाइकेरियसली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट व्हिच टुक प्लेस ओवर देयर. क्योंकि गवर्नमेंट रन, वहां पर टूरिज्म डिपार्टमेंट की रन वो क्रूज शिप थी. ठीक है, तो देखो, वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंडर आवर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है,
one of the basic concepts under our law of torts, under the head of no fault liability. नो फॉल्ट लाइबिलिटी इज द रूल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी. ठीक है. जनरल रूल क्या है भाई लॉ का? जनरल रूल सिंपल सा इतना ही होता है दैट अ पर्सन विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. द जनरल रूल इज दैट अ पर्सन विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ओन एक्ट्स. राइट. दैट इज द जनरल रूल ऑफ लॉ. कि आप उसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबल करोगे या किसी पर्सन को सिर्फ तब रिस्पॉन्सिबल करोगे जब उसने खुद कुछ गलत किया. सो आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन wrongful acts. I cannot be made accountable for the wrongful acts of the others. That's the general rule. But under the law, there are certain exceptional situations wherein there is an exception to this general rule, that there are certain situations wherein a person can be held responsible. A person can be held responsible for the acts of others. ठीक है. ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती है लॉ में जहां पर आपको किसी और पर्सन के एक्ट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल किया जा सकता है. And that exceptional situation is the rule of vicarious liability. That exceptional situation is the rule of vicarious liability, wherein a person is actually held responsible for the wrongful acts of others. But vicarious liability is applied in special situations. Vicarious liability is applied in special situations. स्पेशल सिचुएशंस का यहां पर मतलब क्या होता है? wherein the defendant and the wrongdoer share a special relationship. ठीक है. जहां पर डिफेंडेंट और रॉन्ग डूअर के बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है, वहां पर वाइकेरियस लायबिलिटी को हम अप्लाई करते हैं. स्पेशल रिलेशनशिप्स लाइक मास्टर सर्वेंट, प्रिंसिपल एजेंट, special relationships like partners in a partnership firm, special relationship like employer employee, and some others as well. तो vicarious liability ऐसा नहीं कि हम हर किसी सिचुएशन में अप्लाई कर देते हैं. The rule of vicarious liability is applied when the wrongdoer and the defendant is actually sharing a special kind of a relationship. And इस special relationship में है क्या? That one person is actually acting on behalf of the others. ठीक है. स्पेशल रिलेशनशिप में क्या होता है कि herein the one person is actually acting on behalf of the others. A servant is acting on behalf of the master. An employee is acting on behalf of the employer. An agent is acting on behalf of the principal. And law simply ये कहता है, if you are reaping benefits out of the acts of the others, ठीक है, if you are getting any kind of a benefit out of the act of the other, then you should be held responsible, and then you ought to own the responsibility for the wrongful act of that person as well. तो एम्प्लॉयर को अगर एम्प्लॉय के एक्ट का बेनिफिट मिल रहा है, मास्टर को सर्वेंट के एक्ट्स का अगर बेनिफिट मिल रहा है, अ प्रिंसिपल इज गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ द एक्ट्स ऑफ द एजेंट्स, पार्टनर्स आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर. तो ऐसी सिचुएशन में यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द अदर एज वेल. ठीक है. अब रिक्वायरमेंट सिंपली सी इतनी होती है दैट सच अ रॉन्गफुल एक्ट, वाइकेरियस लायबिलिटी हम कब अप्लाई करते हैं? व्हेन द रॉन्गफुल act is committed in the
course of employment. So whenever the wrongful act is committed in the course of employment, at that point of time, the superior is held responsible. ऐसा नहीं है कि मेरा सर्वेंट अगर कुछ भी अपनी मर्जी से गलत कर रहा है तो मैं उसके हर गलत एक्ट के लिए लायबल हूंगा, है ना. इट्स नॉट लाइक दैट द एम्प्लॉयर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी एक्ट ऑफ द एम्प्लॉय. whenever the employee is committing a wrongful act in the course of the employment, तब आप वहां पर मास्टर को लायबल कर सकते हो. कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहां पर क्या होता है? कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिंपली रेफर्स टू whenever the wrongful act is connected to the authorized act. Authorized act से related अगर कुछ गलती वहां पर कमिट हुई है, then the master will be held responsible, then the superior will be held responsible. तो सिंपल सी चीज है कि अगर आपने कोई ड्राइवर रखा है, ड्राइवर आपकी गाड़ी चलाते वक्त, आपके ऑथराइज्ड एक्ट को काम करते वक्त अगर एक्सीडेंट कॉज कर देता है, देन यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. एंड आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मास्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल या एम्प्लॉयर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज करने का सिंपल सा रीजन यही होता है, दैट इज द रूल ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर. दैट इज लेट द सुपीरियर बी लायबल, लेट द मास्टर बी लायबल. ठीक है. बट सब्सिक्वेंटली द क्वेश्चन केम अप कि भाई अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ गलत करते हैं, इफ द एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, इफ द वर्कर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर डूइंग समथिंग, सम रॉन्गफुल एक्ट, तो क्या गवर्नमेंट को भी लायबल किया जा सकता है एज पर द रूल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी? सो व्हेन इट कम्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट, स्टेट की वाइकेरियस लायबिलिटी की अगर हम बात करते हैं ना, तो स्टेट कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन सर्टेन सिचुएशन. स्टेट के फंक्शंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. वन इज नोन एज सॉवरेन फंक्शंस ऑफ द स्टेट, द अदर थिंग इज नोन एज नॉन सॉवरेन फंक्शंस of the state. ठीक है. One is known as sovereign functions of the state. The other thing is known as non-sovereign functions of the state. The state can be held vicariously liable. The state will be held vicariously liable only for non-sovereign functions. The state cannot be held responsible in the exercise of its sovereign फंक्शंस. ये चीज याद रखें, जब भी स्टेट अपने सॉवरेन फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय के रॉन्गफुल एक्ट्स आर कमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ द सॉवरेन फंक्शंस ऑफ द स्टेट, देयर द स्टेट कैन नॉट बी हेल्ड वाइकेरियसली लायबल. बट जब भी एम्प्लॉय नॉन सॉवरेन फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा था, वहां पे कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट होता है, देन द स्टेट कैन बी हेल्ड वाइकेरियसली लायबल इन दैट सिचुएशन. दिस इज द प्राइमरी रूल ऑफ द वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट. ठीक है. चलो फिर इसको देखते हैं. तो जनरली द स्टेट इज हैविंग अ ट्रेडिशनल इम्यूनिटी इन केसेस ऑफ नॉन सॉवरेन फंक्शंस. ठीक है. इन केस ऑफ सॉवरेन फंक्शंस, आई एम सो सॉरी. अब सॉवरेन फंक्शंस हैं क्या? सॉवरेन फंक्शंस रिफर्स टू दोज एक्शंस व्हिच आर यूनिक टू स्टेट पावर. ठीक है. सॉवरेन फंक्शन बेसिकली रेफर्स टू those kind of actions which are unique to the state powers, like police actions, military operations, national security protocols. अब पुलिस एक्शन क्या आप और मैं कर सकते हैं? मिलिट्री ऑपरेशंस क्या आप और मैं कर सकते हैं? नहीं ना. दैट इज एन एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द स्टेट ओनली. Those things are considered as sovereign functions of the state, and the state is historically protected from liability under its sovereign functions. But जब non sovereign functions की बात आती है, ठीक है, these are the kind of actions which are comparable to private enterprises as well. स्कूल मैं और आप भी चला सकते हैं ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स मैं और आप भी चला सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मैं और आप भी कर सकते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी मैं और आप भी करवा सकते हैं, राइट? तो वो एक्शंस व्हिच आर कंपेरेबल टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट एंटरप्राइजेस, दे आर कंसिडर्ड एज नॉन सॉवरेन फंक्शंस ऑफ द स्टेट. सो लाइक कमर्शियल अंडरटेकिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पर्सनल, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, these are considered as non-sovereign functions of the state, and herein the state is held liable for the employee's negligence.
भाई किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर कोई डॉक्टर नेग्लिजेंटली ऑपरेशन करता है तो द स्टेट कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन दैट सिचुएशन ना. वाई? बिकॉज इट इज अ नॉन सॉवरेन फंक्शन ओवर देयर. सो वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट को जब हम डिस्कस करते हैं तो सिंपल सा रूल कंसिडर किया जाता है. इफ द एक्ट इज कमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ द सॉवरेन फंक्शन ऑफ द स्टेट इज नॉट वाइकेरियसली लायबल. बट इफ द एक्ट इज कमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ द नॉन सॉवरेन फंक्शन ऑफ द स्टेट, वहां पर स्टेट को हम वाइकेरियसली लायबल कर सकते हैं. और यहां पर जो क्रूज शिप रन कर ही जा रही थी, है ना, हेरिन इट वाज द इंसिडेंट ऑफ अ क्रूज शिप. तो इज दैट अ सॉवरेन फंक्शन ऑफ द स्टेट? द आंसर इज नो. एंड देयरफॉर द स्टेट कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेग्लिजेंस व्हिच वाज कमिटेड ओवर देयर. ठीक है. लैंडमार्क केसेस की अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू द वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट, इट इंक्लूड्स, सबसे पहले ये चीज डिस्कस की गई थी इन द केस ऑफ पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. 1861 का ये केस था. And this case established the foundational distinction between the sovereign and non-sovereign functions following negligence by the government workmen. Then came the case of Haribanji case, that is Secretary of State versus Haribanji, and this challenged the absolute immunity, ruling that mere possession of sovereign power does not grant blanket immunity to the state. Non-sovereign functions के लिए आपको फिर भी liable किया जा सकता है. Then came the case of Kasturi Lal versus State of UP and reaffirmed strict sovereign immunity, and the state was ruled not liable for misappropriated gold as police were exercising its sovereign power. वहां पे था क्या कि पुलिस के मालखाने से एक पुलिस ऑफिशियली कॉन्फिस्केटेड गोल्ड लेकर भाग गया था. अब जब ओनर ने वहां पर केस फाइल किया, द पर्सन टू होम द गोल्ड एक्चुअली बिलोंग, द स्टेट केम सॉवरेन इम्यूनिटी, और वहां पर इम्यूनिटी स्टेट को दी गई. The state was not held responsible for the misappropriation of goods by the police personnel. Why? Because the wrongful act was committed in furtherance of the sovereign functions of the state. तो सिंपल सा रूल ये होता है. बट अगर स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने लगे, तब भी क्या हम स्टेट को लायबल नहीं कर सकते? लेट्स से इफ द स्टेट इज एक्चुअली वायलेटिंग आवर फंडामेंटल राइट्स इन फर्दरेंस ऑफ इट्स सॉवरेन फंक्शन, वहां पर भी लायबिलिटी नहीं आएगी क्या? वहां पर आ सकती है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की अगर हम बात करें, सो द क्लेम्स आर परस्यूड अंडर आर्टिकल 32 एंड 226. ठीक है. जैसे आप लोगों ने उस केस का नाम सुना होगा, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस भीम सिंह. देन वी हैव द केस ऑफ रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहां पर एक पर्सन को फ्री करने का ऑर्डर कोर्ट से पास हो चुका था, बट द गवर्नमेंट स्टिल केप्ट हिम अंडर डिटेंशन. अनलॉफुली डिटेन किया गया था भीम सिंह को इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. वहां पर रेमेडी मिली क्योंकि those were the actions which resulted in violation of fundamental rights of the individual. अब पुलिसिंग करना, किसी को अरेस्ट करना स्टेट का काम है, that we are not questioning, that is the sovereign function. But if the sovereign function is leading to the violation of constitutional and fundamental rights of the person, there you have the option of taking the constitutional remedy over there. These landmark cases of Rudal Shah, Neelamati Behra established that state must pay compensation for fundamental rights violation. ठीक है. एंड दिस एंटायरली बाईपासेस द सॉवरेन इम्यूनिटी डिफेंसेस, क्रिएटिंग अ पैरेलल सिस्टम ऑफ लायबिलिटी. बट जब ट्रेडिशनल लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंडर हम स्टेट की लायबिलिटी की बात करें, सो दीज क्लेम्स आर परस्यूड अंडर आर्टिकल 300 एंड दीज आर सब्जेक्ट टू द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड हिस्टोरिकल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सॉवरेन वर्सेस नॉन सॉवरेन डिबेट. तो अब यहां पर अगर हम देखें कि बरगी डैम वाले इंसिडेंट में क्या स्टेट को लायबल किया जा सकता है टू प्रोवाइड कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम्स ओवर देयर? So yes, the state can be held responsible because the wrongful act took place not in furtherance of the sovereign function of the state, but that was a non-sovereign function, and therefore the state can be held vicariously liable in that situation. Okay. Now, the next topic which we have is about the recent verdict given by the Supreme Court with respect to the hate speech, wherein the Supreme Court made it clear that the blueprint is complete and the problem is in execution. पॉइंट क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया था फॉर न्यू हेट स्पीच लॉज, कि नए लॉज बनाने की जरूरत है. ठीक है. बट कोर्ट ने यहां पर क्लियर किया कि भाई हेट स्पीच के लिए वी हैव इनफ प्रोविजंस अंडर आवर क्रिमिनल लॉज. प्रॉब्लम एनफोर्समेंट है. ठीक है. प्रॉब्लम एनफोर्समेंट है, प्रॉब्लम लेजिस्लेटिव वैक्यूम नहीं है. बट व्हाट एग्जैक्टली इज अ हेट स्पीच? What exactly is a hate speech? Now, as the term suggests, इतना तो हमें समझ में आ गया होगा hate speech शब्द सुन के कि this is about promoting
any kind of a hatred in the society or community. अब हेट्रेड किस बेसिस पे प्रमोट करने की कोशिश करोगे आप? भाई हेट्रेड कैन बी प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ religious differences, on the basis of linguistic differences, on the basis of caste differences, on the basis of place of origin, so on and so forth. Point सिर्फ इतना है, whenever you try to promote hatred in the society, ठीक है, whenever you incite people to commit offenses against another group of individuals, and the primary basis of your promotion of hatred or incitement being given to the public for committing any kind of an offense against a particular group is actually on the basis of these kind of factors, then your speech falls under the category of hate speech. Okay? Then your speech actually falls under the category of hate speech. And hate speech को punish करने के लिए हमारी कंट्री में आईपीसी के अंडर भी और बीएनएस के अंडर भी स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं. ठीक है, बस होता क्या है कि यहां पर भी केस क्यों फाइल हुआ था, पिटीशन क्यों पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक, कि जब पॉलिटिकल रैलीज में सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स किसी भी तरीके की हेट्रेड फैलाने की अगर कोशिश करते हैं, so generally police does not take any kind of an action against them, and that was the primary reason that why the petition was filed in the Supreme Court of India. ठीक है, asking the Supreme Court for creation of new hate speech laws, but the court made it clear कि भाई प्रॉब्लम लेजिस्लेटिव वैक्यूम नहीं है, है ना, प्रॉब्लम लेजिस्लेटिव वैक्यूम नहीं है, प्रॉब्लम वहां पर आपका एनफोर्समेंट है. अब क्यों परसेप्शन था लेजिस्लेटिव वैक्यूम को लेकर? ठीक है, सो जैसे 2017 में द लॉ कमीशन रिपोर्ट रिकमेंडेड क्रिएशन ऑफ न्यू ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 153C एंड 500A 505A ऑफ आईपीसी. लॉ कमीशन ने कहा कि भाई हेट स्पीच के लिए अलग से कुछ ऑफेंसेस बनाने की जरूरत है, सेक्शंस ऐड करने की जरूरत है, तो इस वजह से परसेप्शन आने लगा. Then unchecked media narratives during the COVID-19 तबलीगी जमात congregation. COVID-19 के टाइम पे when there was a lockdown in the country, तबलीगी जमात which is a kind of a religious congregation of the individuals, उनकी एक्टिविटीज को लेकर मीडिया में नैरेटिव बनना शुरू हुए, नैरेटिव चलना शुरू हुए. ठीक है, जहां पर they were trying to pinpoint that perhaps तबलीगी जमात was primarily or solely responsible for the spread of COVID, which led to a kind of a hatred against a particular community on the basis of religion. बट उसके ऊपर भी किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं हुआ, तो लगना शुरू हुआ पिटीशन को कि perhaps there is a legislative vacuum. The third was public instances of unpunished inflammatory speeches creating the assumption that law itself is missing. ठीक है, पॉलिटिकल रैलीज में इलेक्शंस के टाइम पे स्पेसिफिकली यहाँ पर दिल्ली के इलेक्शंस की बात है 2020 के अराउंड की. ठीक है, कि जिस तरीके से पब्लिक नैरेटिव डेवलप किया जाता है, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस दिए जाते हैं पब्लिक रैलीज में, बट नो एक्शन इज टेकन, सो दैट लीड्स टू द अजम्पशन दैट परहैप्स द लॉ इटसेल्फ इज मिसिंग. बट द कोर्ट मेड इट क्लियर. ठीक है, रिसेंटली अ डायरेक्ट वर्डिक्ट ऑफ जस्टिस विक्रमनाथ एंड संदीप मेहता, the bench adjudicated on the premise that substantive criminal law adequately addresses acts that promote enmity or disturb public tranquility. The court made it clear that the contention that the field of hate speech remains legislatively unoccupied is misconceived. कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास लेजिस्लेशन है ही नहीं हेट स्पीच को कंट्रोल करने के लिए या पनिश करने के लिए. कोर्ट ने इन सारे केसेस का एग्जांपल दिया, सारे ऑफेंसेस का एग्जांपल दिया. Like section 153 of IPC, it used to deal with promoting enmity between groups on the ground of religion, race, place of birth, residence, language, or caste. Section 153B of IPC, imputations prejudicial to national integration. Section 295A of IPC, which deals with deliberate and malicious intention of outraging the religious feeling of any class of citizens. Section 298 of IPC, intention of wounding religious feeling deliberately, either by words or gestures. Section 505 of IPC, statements that promote hatred between classes. तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है भाई कि हमारे पास कोई लॉ ही नहीं है हेट स्पीच को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, पनिश करने के लिए. कोर्ट ने कहा कि प्रॉब्लम एनफोर्समेंट में है. द क्राइसिस इज ऑफ एनफोर्समेंट एंड नॉट लेजिस्लेशन.
पिटिशनर की क्या कंप्लेंट थी कोर्ट में? द कंप्लेंट ऑफ द पिटिशनर वाज there is a systemic police inaction and delayed responses and the diluted charges and failure to register FIR against private individuals and fragmented application of the law against contemporary media narratives. पिटिशन ने इस वजह से कंटिन्यूइंग मैंडेमस डिमांड करी थी कोर्ट से, एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, द कमांड ऑफ द कोर्ट. व्हाई दे वर डिमांडिंग फ्रॉम द कोर्ट? उनका कहना था पुलिस कोई एक्शन ही नहीं लेती है. ठीक है, किसी हेट स्पीच की कंप्लेंट पुलिस के पास करने को जाओ, अगर इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने हेट स्पीच दिया है, पुलिस विल नॉट टेक एनी एक्शन. ठीक है, एफआईआर ही नहीं लिखेंगे. और कंटेम्प्रेरी मीडिया जब किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी जगह, किसी भी लैंग्वेज के लोगों के ऊपर स्पेसिफिक नैरेटिव डेवलप करना शुरू करती है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता. And therefore they were demanding continuous mandamus from the court, but the court rejected the continuous mandamus, while the court explicitly rejected the request for sustained judicial oversight, because they said continuous mandamus में होता क्या है कि whenever a court passes a continuing mandamus, mandamus का मतलब होता है we command, the command of the court which the public authority have to follow. continuing mandamus के केस में ना, उस पब्लिक अथॉरिटी को रेगुलर बेसिस पे कोर्ट को अपने एक्शंस की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि हमने अब ये एक्शन लिया, हमने अब ये एक्शन लिया, हमने अब ये किया, हमने अब ये किया. कोर्ट ने कहा इस तरीके का रेगुलर ओवरसाइट इज नॉट अ गुड वन. कीपिंग मैटर्स पेंडिंग इन द एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर ऑफेंसेस टर्न्स द कोर्ट इनटू अ सुपरवाइजरी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, वायलेटिंग इंस्टीट्यूशनल कमिटी एंड जुडिशियल रेस्ट्रेंट. कि भाई आगे कभी कोई हेट स्पीच होगा, उसके लिए अभी से हम कंटिन्यूइंग मैंडेमस अगर इशू कर देंगे, तो भाई कोर्ट का काम डिस्प्यूट को सॉल्व करना था या ओवरसाइट कमेटी की तरह काम करना था? तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशियल रेस्ट्रेंट वाली बात जो होती है, वो उसके अगेंस्ट चली जाएगी. इसी वजह से कोर्ट ने वहां पर कंटिन्यूइंग मैंडेमस इशू करने से मना किया. बिकॉज द कोर्ट स्टेटेड दैट द क्रिमिनल कोड ऑलरेडी प्रोवाइड्स अ हायरार्किकल प्रोसीजरल फ्रेमवर्क, दैट इज पुलिस के पास कंप्लेंट करो, पुलिस ना सुने तो मजिस्ट्रेट के पास जाओ, फिर आप जुडिशियल रिव्यू में आओ. Uneven or deficient use of existing mechanisms does not justify replacing them with court-led supervision. कि भाई अगर पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, ठीक है, आप प्रॉपरली उस चीज को एस्केलेट नहीं कर पा रहे हो, दैट इन इटसेल्फ विल नॉट जस्टिफाई कि कोर्ट पूरे टाइम सुपरवाइज करते रहे. एंड फिलहाल इस स्पेसिफिक केस में तो कोर्ट ने एक्शन लेने से भी मना किया. जैसे इलेक्शन रैली स्पीचेस ऑफ 2020, there was an appeal regarding inflammatory slogans chanted by political leaders during 2020 assembly elections, but the court clarified that prior sanction is not related to direct an FIR investigation under CRPC. However, the court refused to register the FIR based on the facts, stating that no cognizable offense was being made out over there. कोर्ट ने कहा कि हम रजिस्टर नहीं करवाएंगे FIR क्योंकि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बन रहा है. वहां पर प्राइमरली अनुराग ठाकुर जो कि एक लीडर है भारतीय जनता पार्टी का, उनका एक स्टेटमेंट था उस पॉलिटिकल रैली में कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों. अब वहां पर उन्होंने किसी रिलीजन का नाम नहीं लिया, किसी स्पेसिफिक बैकग्राउंड या एथनिसिटी की बात नहीं की. ठीक है, बट लोगों ने उसको एक अलग तरीके से रिलेट करके देखा कि जब बीजेपी के लीडर ने अगर स्टेटमेंट दिया तो किसके अगेंस्ट दिया होगा. बट देयर वाज नो सच रेफरेंसेस बीइंग मेड बाय अनुराग ठाकुर इन दैट स्पीच. तो इसी वजह से कोर्ट ने कहा कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बन रहा है, and therefore we are not going to take any action. So primarily जो concern था, जो लोगों को लगता था कि भाई there is no law in our country to regulate or to prevent or to punish the instances of hate speech in our country. सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है भाई, हेट स्पीच के लिए हमारे पास लॉज हैं, एनफोर्समेंट की प्रॉब्लम है. एनफोर्समेंट को के ऊपर ओवरसाइट, रेगुलर ओवरसाइट कोर्ट नहीं करेगा. आपके पास एक एस्केलेटरी मैकेनिज्म है, पुलिस के पास जाओ, नहीं अगर वो कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं मजिस्ट्रेट के पास जाओ. कोर्ट रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूइंग मैंडेमस के फॉर्म में उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं करेगा. सो द कोर्ट स्टेटेड दैट द लॉ कैन नॉट प्रीएम्प्टिवली क्योर सोसाइटी ऑफ हेट्स. ट्रू प्रिवेंशन रिलाइज नॉट ऑन ड्राफ्टिंग मोर लेजिस्लेशन बट ऑन द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियंस ऑफ द पब्लिक एंड द रिगरस एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ड्यूटीज बाय द अथॉरिटीज. ठीक है, so these were the two important topics from the month or from the first week of your May. I'm so sorry. ठीक है, अच्छा, one important thing, Elite Champions batch is coming up, wherein actually the serious preparation begins. और पिछले सालों के अगर टॉपर्स को देखोगे तो सबने चैंपियंस बैच का एक्सेस लिया और उसको मैक्सिमम यूटिलाइज भी किया है. द बेनिफिट ऑफ the champions batches, you'll get personal WhatsApp mentorship groups, ranked study materials, champions only mocks, direct access to subject directors, ठीक है, regular PTMs, dedicated doubt groups as well.
but the seats are limited and the competition for these champions batch are real. अब अप्लाई किस तरीके से करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, ठीक है। 6th एंड 7th को चैंपियंस बैच का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, तो टेस्ट को स्किप मत करो, टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, रजिस्टर ध्यान से करवा लेना। एंड अलॉन्ग विद दैट नाउ यू हैव अ चांस टू बी इन द सेम रूम just like your CLAT toppers as well. So LegalEdge is coming up with the CLAT toppers tour of 2026, which includes Indore, Jaipur, Jodhpur and many more cities are coming soon as well. इसके लिए भी आप रजिस्टर करा सकते हो, wherein you have the opportunity to sit in the same room with your toppers, ठीक है, understand, clear your doubts from the toppers only, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, how the things will work, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आती है, सारी चीजें, ठीक है। सो रजिस्टर फॉर द सेम एज वेल, इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर आवर वीकली लीगल राउंड अप। रेस्ट, तबीयत वगैरह का ध्यान रखो, आराम से पढ़ाई करो एंड विल मीट सून। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।